Good afternoon, welcome back. Okay, I welcome you to LaunchPad Education Punjab. ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ MCQs, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾसेस ਹੋ ਚੁੱਕੀ हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, अदर ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀम्स ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ हैं, ऑल ग्लोबल इंडाइसेस, जो ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ है, इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन कमिंग रीसेंट मंथ्स, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ सारे सैशनस अटेंड नहीं किए then you can go and attend, ठीक है। ओके सो स्टार्टिंग लेक्चर ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰ ਦੈਨ दैट if you aspire to become a part of the Indian administration then start preparing for this exam with launchpad education, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰੇਡੀ a lot of good content is being provided at YouTube and other classes are also available अगर तुसी organized तरीके नाल preparation करना चाहते हो ता, ठीक है। At your convenience classes are available, you can attend the demo classes, weekday classes available है with the best of teachers। तुसी अपने queries ਜਿਹੜੀਆਂ solve ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ and then on the given numbers you can call if you require any information, किसी भी तरह ਦੀ information, help या query होए you can call on these numbers, ठीक है। Moving on to the first MCQ for the day. Drill ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, you are going to give the answers before I tell you। अगर ਤੁਸੀਂ की होर source ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ है, this becomes a test, ठीक है जी। First MCQ, consider the following statement regarding characteristics of the climate groups according to Koppen। First statement, tropical, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ tropical ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that means average temperature of the coldest month is 8 degree Celsius or higher। cold climate यानी कि average temperature for all the months is below 100 degree Celsius and dry climate has been characterized as potential evaporation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ precipitation ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ exceed ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ distribution ਦਿੱਤੀ ਹੈ, you have to tell me the correct statement। Good afternoon everybody, Radhika, Sakshi, Rolly, S. Pathania, Manjeet, Neeraj। C, 2 and 3, okay। D, Usha Punya says D। Answer to this question is D, सारी ही statements correct है। Now here ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ basic revise ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ answers ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ tropical ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ, cold climate ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ and dry climate ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ। Here is the chart in front of you जो तुसी रिवाइज करने, you can capture the screenshots, नहीं तो PDF will be provided। tropical climate is the one where average temperatures of the coldest month जेड़ा है that is 8 degree Celsius or higher। dry climate ये तो सब तो easy है, potential evaporation जेड़ी है बारिश precipitation नालों घट हो जाती है। then cold temperature, warm temperature, average temperature coldest month and lowest month is below 18 degree and here are the other क्राइटेरियाज, ये तुसी रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। ओके अ लिटिल बिट विजिबिलिटी प्रॉब्लम अगर है तो पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ तो तुसी इजीली इनू देख सकते हो, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर अक्रॉस द ट्रॉपिक्स अक्रॉस द पोल्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की है। A, first statement, high pressure areas along 30 degree north and 30 degree south are known as subtropical highs। near the poles the pressure is low and it is known as polar lows। options, one only, two, both and then neither। this is a very basic question। sea level pressure ਦੇ ਬਾਰੇ statements ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। अगेन क्लैरिटी प्रॉब्लम पीडीएफ विच तुहानू क्लियरली नजर आ जाएगा, ठीक है जी। गो ऑन, वन ओनली, ओके। यानी कि हाई प्रेशर है अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ओके। नियर द पोल्स प्रेशर जिहड़ा है वो हाई होंदा है, ओके। देयरफॉर असीं इहनू पोलार हाई भी कहने हैं, राइट। 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ वाले एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पोलार लोज, राइट। और लो प्रेशर बेल्ट्स होंदी हैं, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, वन ओनली। नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई। ये कुछ इस तरह की मूवमेंट है, राइट। 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द प्रेशर इज हाई
and then 60 degree te the pressure jehda hai that is low, and towards the poles it becomes how much? Low. High, sorry, polar high ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Moving on to the next question. Which of the following rivers flow through Rift Valley? Is the sound clear now? Rift Valley तो केड़ी rivers flow करती हैं? दामोदर, महानदी, नर्मदा and then ताप्ती. Go on. Just a second, we are fixing the voice problem. D. All. सारियां flow करती हैं. महानदी also flows. Are you sure? C. 2, 3 and 4. Okay. Answer to this question is B. 1, Damodar, 3 and 4. 3 and 4 था, hopefully I think everyone must be knowing कि नर्मदा and ताप्ती flow through Rift Valley. लेकिन महानदी it does not flow through Rift Valley. Even Damodar, छोटा नागपुर plateau तो जो आंदी है, it flows through a Rift Valley. Damodar is a part of this system. Raleigh has given the correct answer. ठीक है जी, Mahanadi is not a part of Rift Valley. Moving on. Which of the following countries share its border with Black Sea? World Geography ਦੇ ਉੱਤੇ question. Black Sea ਨਾਲ bordering countries: Turkey, Romania, Greece, Georgia. 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4. For your information, this is a question from PPSC previous year. ਹੁਣ answers ਦਿਓ. Black Sea ਨਾਲ bordering countries ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? World Geography ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. B. 1, 2 and 4. Correct. Very nice. Answer is B. 1, 2 and 4. जिन्हां ਨੂੰ clear नहीं है, again this is the map. I'll speak, नहीं तो PDF तो तुसी clearly तुसी देख सकते हो. This is Turkey sharing border. Then it is again this is here Russia, Georgia and Greece is here. Greece भी option सीगा. It is not sharing the Black Sea. Black Sea ਦੇ ਨਾਲ लगदा नहीं है, ठीक है? Okay. Moving on to the next question. Gondwana was formed when Earth's ancient supercontinent Pangaea was split into 2 fragments. It incorporated which of the following regions? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ physical geography पढ़ते हैं, then we start with the formation of this land masses. ठीक है? So Gondwana ਜਦੋਂ form ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ Earth ਦਾ supercontinent ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ Pangaea ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 2 fragments ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है? Which of the following incorporates the present regions: Asia, Africa, Europe and South America? Options are in front of you. Pangaea got split into the 2 fragments, right? Around 2/3 ਸਾਡੇ present continents ਦਾ part ਜਿਹੜਾ ਹੈ that becomes a part of this Gondwana. ठीक है जी? कौन कौन included है? Which countries? F1, 2 and 4. Okay. C. 1, 2 and 4. Okay. Correct. Answer to this question is C. 1, 2 and 4. Okay. It is C. 1, 2 and 4. Even Australia and New Zealand were also considered a part. ये भी part माना जाता है in the Pangaea system. ठीक है? जो 2 parts which split हो गया सी. Next question. Arrange the following elements of elements of Earth's crust in the decreasing order of their weights: silicon, iron, aluminium, calcium and magnesium. A bit of factual question है. In the increasing order ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ place, decreasing order ਤੁਸੀਂ place ਕਰਨਾ ਹੈ from minimum maximum to minimum. Maximum ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ element ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is found in the Earth's crust? Do we have the answers?
C 1 3. Okay, any more answers? C आंसर आया है. Okay, answer to this question is B1 silicon, then it is 3 aluminium, then it is iron, calcium, and then it is magnesium. Here is the information in front of you. ठीक है, केड़ा कितनी परसेंट विच प्रेजेंट है, यू हैव टू लर्न दिस एटलीस्ट एबंडेंस विच उस तो 5 एटलीस्ट 4-5 तो तुसी लर्न कर ही सकते हो. एंड देन लीस्ट जेड़ा है दैट इज मैग्नीशियम. एबंडेंस इज ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बाकी तुसी अरेंज कर सकते हो. ठीक है जी. ओके, राधिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर. इवन एस पठानी हैज गिवन द करेक्ट आंसर. नाउ यू कैन सी द कंपटीशन. even comments ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ students ਹੈ they are giving the right answer to such complex question. ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ competition ਕਿੰਨਾ ਹੈ, because PPSC ਵਿੱਚ you are going to sit with the student ਜੋ IAS PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ठीक है, so start preparing in an organized manner again and again. Next, consider the following statement. More diversity of landforms can be observed in oceans than on the continents. Continental crust jehda hai that is denser than the ocean crust. Third, Pacific Ocean is the largest ocean and it is almost equal to area of all other oceans combined. यानी कि बाकी oceans ਨੂੰ ਅਸੀਂ combine ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਗੋ ਔਨ, ਪੜੋ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਆਂਸਰਸ. You say 1 and 3 is correct. Rolly says 1 and 3. 1 and 3. Okay. करेक्ट है, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, लेकिन की पैसिफिक ओशन बाकी सारे ओशंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈसिफिक ओशन ਦੇ ਬਰਾਬਰ बनेगा. A statement 1 and 2. Okay. यानी कि वन स्टेटमेंट तो सबनू श्योर है, राइट? दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओशन क्रस्ट जेड़ा है दैट इज डेंसर than the continental crust. Answer to this question is C, only 1. ठीक है, नो डाउट पैसिफिक ओशन जेड़ा है लार्जेस्ट ओशन है, लेकिन कंबाइन जो ਅਸੀਂ बाकी सारे ओशंस ਨੂੰ कर देवांगे then ਇਹ पैसिफिक ओशन तो एक लार्जर एरिया ही बनाएगा. ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू इन्ना भी ਵੱਡਾ नहीं है पैसिफिक ओशन कि बाकी सारे ओशंस ਨੂੰ कंबाइन करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ रहेगा. इज इट क्लियर? ठीक है जी. then ओशन क्रस्ट जेड़ा है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नालों डेंसर है. ओके, इज इट क्लियर टू यू? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਦੀ, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, राइट? सियाल किसी का नाम नहीं है. सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम दो एलिमेंट्स है, ताकि ये एलिमेंट्स ओशन क्रस्ट दे है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे है. सियाल एंड सीमा ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. here also this is also सीमा is not again ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. again the elements silicon and magnesium, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਕਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. waiting for your answers. ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is a continental crust, whereas सीमा, yes, ਸਿਆਲ is continental, whereas सीमा, silica and magnesium is the ocean crust. I hope ਇਹ basics ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ. next question, mid ocean ridges occur along convergent plate boundaries, divergent, transform, and then all of the above. ਦੱਸੋ ਜੀ. mid oceanic ridges ਇਹ underwater mountain ranges ਹੈ ਜਿਹੜੇ plate tectonic movements ਦੇ ਨਾਲ form ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ plate movement ਦਾ result ਹੈ? convergent, divergent, transform. Okay, first answer we have got that it is a part of divergent. Okay, right. Answer to this question is B, divergent plate boundaries, whereby boundaries तो away जड़ा है land move करता है, plate tectonics ਦੇ according land move करता है, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ lava ਜਿਹੜਾ ਹੈ volcanic lava ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ it solidifies and ਇਹ underwater mountain system ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ divergent boundary ਦਾ part ਹੈ mid oceanic ridges ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ underwater mountains ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. divergence correct. moving on to next question. western cyclonic disturbances they occur mainly in winter months in India.
cause tropical cyclones in coastal belts of India, then mostly influence the north and northwestern region of the India. Okay, thumbs up दे दो अगर तुहानू मिड ओशियनिक रीजन्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया था. Western cyclones, go on. 1 and 3, okay. What is wrong in statement 2? Waiting for your answers. B, 1 and 3. Okay. What is wrong in statement 2? Causes tropical cyclones on coastal belts of India. Western cyclonic disturbance ਦੇ ਨਾਲ tropical cyclones, okay, tropical cyclones ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ easterlies ਨਾਲ associate ਕਰਦੇ ਹਾਂ tropical cyclones ਨੂੰ. ਇਹ western cyclonic disturbance ਦਾ part नहीं है, ठीक है. During monsoons and even during October times ਜਿਹੜੇ weather phenomena है वो coast tropic, that is main reason because of tropical cyclones. Westerly disturbance ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ tropical cyclones ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते, ठीक है जी. I hope it is clear. Maximum of you the right answer आए सी. Correct. उधर तक पहुंचती नहीं है westerly disturbance. Yes, one of the another reasons. Next, coastal areas तक, ठीक है. उधर means coastal areas. Next, in the deeper parts of ocean, primarily production remains almost nil due to absence of ocean currents, unwelling of water, excess of sulfides, and then sunlight. Deeper parts, primary production जड़ी है that almost remains nil. What is the reason? Photic zones whereby sunlight जड़ी हो पहुंचती है, right? Okay, D answer आया है. Phytoplanktons, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ plants ने, ਉਹ वाले फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ने जिथे तक की सनलाइट जड़ी प्रोड्यूस कर सकते पहुंच जाती है, राइट. ऑन सर्टन एरियाज तक ही सनलाइट जड़ी पहुंचती है एंड डीपर पार्ट्स से सनलाइट ना पहुंचने कारण द प्रोडक्शन जो है इट ऑलमोस्ट रिमेन्स निल. ए फोटिक जोन्स, करेक्ट, ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भांगड़ एंड खद्दर आर ओल्ड एंड न्यू एलुवियम रिस्पेक्टिवली. Bhur donates an elevated place of land situated along the banks of Ganga river. Go on. And ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਕੜ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੌਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਭੰਗੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਦਰ? Okay, C statement is correct. Okay. ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ सैंड ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ at the banks of the river, ठीक है. So this is Bhur, denotes as a elevated piece of land and ਇਹਦਾ main cause of creation ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ठीक है. ਉਹਦੀ accumulation ਕਾਰਨ this is formed, right. I hope this is clear to you. Second statement ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ. Okay. Moving on to the next question. Which of the following river does not drain into Bay of Bengal? Mahi, Penner, Tapti. Does not drain into Bay of Bengal. Drainage system ਦਾ basic rivers ਦੇ ਉੱਤੇ question है. Bay of Bengal ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Arabian Sea ਵਿੱਚ flow ਕਰੇਗੀ. Which is the river? Go on, waiting for your answers. A, 1 and 3. Okay. Manjeet Singh has answered A. Very nice. Govind says C, 1 and 2. Okay. Mahi, Tapti, Indus, Sabarmati. All these. Mahi and Tapti. Correct answer to this question is A, 1 and 3. Okay जी, ठीक है जी.
I hope you are able to answer. Even if parts which pata si, then you could answer. Next question. Which of the following evidence supported the continental drift? Continental drift theory ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ किसी person द्वारा. इस किसी ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? Rocks of same age across the oceans, jigsaw fit of shorelines of Africa and South America, placer deposit, and then we have the stilett deposits. Continental drift theory was given by Alfred Wegener. Correct. Okay. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ? Okay, first answer we have got that ਸਾਰੇ ਹੀ features ਜਿਹੜੇ ਹੈ they support it. Okay, rocks of same age across the oceans, for example Brazil and West Africa दोनों ocean apart ने, लेकिन ਜਿਹੜੀ rocks ने they have evidence कि ये same age तो belong करते हैं, right? Then jigsaw fit South America and Africa, the ਜਿਹੜਾ border ਜਿਹੜੀ bordering coastline है that is somewhat सेम कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਗਸਾ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ? ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਸੇਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਪਲੇਸਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 골ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ across the continents, across the seas, a placer deposit ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ evidence is same. That is why ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ factors ਹੈ ਇੱਕ continental drift theory ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ support ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? Correct. That is remain in glaciers till it. Next question. Oceans act as a large carbon sink on Earth due to its large geographical coverage, difference in partial pressure of carbon dioxide between sea water and air, and then the rich population of phytoplanktons and sea grass. D, all the statements are correct. Okay, carbon dioxide ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ readily ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ dissolve ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? So large geographical coverage ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ oceans ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ carbon sink ਹੈ because mix ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Then difference in partial pressure carbon dioxide ਦਾ at the sea water difference ਹੈ at different levels, ਇਸ ਕਰਕੇ carbon dioxide ਜਿਹੜੀ ਉਹ easily move ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, so it acts as a sink. and then phytoplanktons already ਆਪਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, sunlight ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ minerals are released. Very good. Next question. Consider the following statement regarding red and yellow soil. The red soil develops on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall. They are fertile when fine grained and poor fertility when they are coarse grained. Third statement, they are rich in nitrogen, phosphorus and humus. Go on. Red and yellow soil ਦੇ ਉੱਤੇ simple question है, basic NCERT I think 9th or 10th ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. So A 1 and 2 they are poor in nitrogen, phosphorus and humus content. ठीक है जी, बाकी दो statements are absolutely correct. Okay, most of you have given the correct answer. Nice. Next question. Which of the following processes does not contribute to the enrichment of minerals in the rocks? Rocks ਦੇ ਵਿੱਚ minerals ਨੂੰ enrich ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ process contribute ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? Weathering of the rocks, erosional and depositional actions of the river. Low grade ores ਨੂੰ enrich ਕਰਨ ਲਈ which of the following is not followed? D, none of the above. Right. ਇਹ enrich ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ quality ਜਿਹੜੀ ਹੈ minerals ਦੀ rock ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? reduce ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? So weathering enrich ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, then erosional and depositional. Even अगर ਤੁਹਾਨੂੰ definitions पता है ਤੁਸੀਂ easily make out कर सकते हो, ना ਤਾਂ erosion या deposition ना weathering कुछ भी contribute नहीं करता in the enrichment of the minerals in the rocks. Everyone has given the correct answer. Next question. Consider the following regarding Zast topography. Zast topography is commonly associated with carbonate rocks. It occurs in temperate, tropical, alpine and polar environment.
Zar's system is very vulnerable to groundwater pollution as it acts as a natural water filtration system. Go on. दसो जी. A special kind of topography है, and I think rare of you must have studied, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत चंगी तरह पढ़ा होगा. Which is the correct statement. ज़्यादातर soluble rocks, water ਜਿਹੜੀ rocks है ਕਿਵੇਂ soluble ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ water ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ topography ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, right? And then carbonates including limestone etc. ਉਹ ਵੀ topography ਨੂੰ ਇਹ study ਕਰਦਾ ਹੈ. So, which is the correct statement? First is correct. Okay, it is commonly associated with carbonate rocks. वो तो मैं ही बोल देता ना, carbonate rocks like limestone. Because limestone etc. carbonate rocks ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ water ਵਿੱਚ directly soluble ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ carbonate rocks water ਵਿੱਚ dissolve ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ topography ਉਸ time ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Zar's topography. More than 10% of earth ਦਾ ਜਿਹੜਾ surface ਹੈ ਉਹ ਇसी topography ਨਾਲ covered ਹੈ. Limestone as well as dolomite. Absolutely correct. Okay, 1 and 2 statement. Correct. Answer is 1 and 2 statement. A highly vulnerable है to the ground water as it acts as a natural water filtration. ठीक है, तो मैं जैसे कि एक टोपोग्राफी उदो ही देखने को मिलती है जब dissolving content dissolve होने की capacity ਜਿਹੜੀ है carbonates ਦੀ like limestone and dolomite that increases. ठीक है, so highly vulnerable है. ठीक है, अब श्योर हो गया सबको? तो जिन्होंने पहली बार सुना सी वो भी हाथ खड़े करो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ज्योग्राफी. नेक्स्ट, which of the following earthquakes are related due to sliding of rocks along a fault plane? Collapse earthquake, explosion, volcanic, and D we have is tectonic. Sliding of rocks along the fault plane. Volcanic earthquakes ਜਿਹੜੇ है violent volcanic eruptions ਦੇ ਨਾਲ create होंगे. So volcanic eliminated. Tectonic okay. Collapse and बाकी की है. Collapse ਜਿਹੜੇ है that because of the intense mining. अगर आप mining activity increase कर देंगे then collapse earthquake is one of the result of intense mining. Okay. Okay. And then answer to this question is D, tectonic. Collapse, volcanic, and explosion earthquake usually happens because the nuclear systems that are properly working is because of the nuclear activities. Is the voice okay now, everybody? ठीक है जी, हुन चलिए आगे. Just a second, we are fixing the issue. Just a second. Voice fluctuation. Video. एक वायर लगाता था नीचे ग्रे कलर की. Is the voice okay now? नहीं चल रहा.
वो ऑफ हो गया स्क्रीन। ये ओबीएस पे हुआ है शायद। ओके, एवरीथिंग ओके ना? एक बार थम्स अप दे दो, फिर स्टार्ट करते हैं। सब ठीक है? वॉइस एंड ऑडियो एवरीथिंग ओके? ओके, ठीक है। सो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स? रॉक्स से स्लाइडिंग करके केड़ा अर्थक्वेक जेड़ा है दैट हैपेंस। यस, राधिका नोज ऑल द टेक्निकलिटीज। ओके, आ जाओ सारे वापस। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन। ओके, ठीक है जी। हुन still fluctuating or okay? Okay, so we have already done this tectonic earthquakes. Moving on to the next question. Consider the following statements. Estuaries are more favorable than deltas for setting up of the large ports. The west coast of India ਜਿਹੜੀ है that is both emergent and submergent. Third statement, emergent coast is formed only during the upliftment of the land. Go on. Read the statements carefully and give me the answers. Go on quickly, I want the answers. 1 and 3. Okay, first answer we have got from Dolly. It says 1 or 3 correct hai sirf. Okay. B, C. Western coast जो है वो northern side पे submergent है, whereas emergent है in the southern side. Answer is 1 and 2. Emergent coast only due to uplifting of land नहीं होती. Suppose अगर sea level जड़ा है वो down चला जाए, ठीक है? If sea level goes down, then also emergent coast जड़ी है comes into the picture, right? And western coast both emergent as well as submergent. ठीक है जी, please keep this in your mind. ठीक है जी, western coast northern side it is submergent and southern it is emergent. For example, the Kerala coast. Okay, ठीक है, very nice. Moving on to the next question. Consider the following statement. Glaciers form only on lands. Glaciers occupy less than 1% of the world's total area. Glacier ice is one of the largest reservoir of fresh water on earth. Emergent, submergent, western and eastern coast बहुत basic question है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mistake expected नहीं सी. Okay, 3 only. C, 3 only. Any more answers? Okay, 3 only.
Okay, correct answer to this question is 3 only. It is C, 3 only. ठीक है जी, simple easy question सीखे. It is 10%. It is less than 10%. ठीक है, okay, we have got exactly 3%. Okay, ठीक है जी. Moving on to the next question. Consider the following statements regarding pole fleeing force. Again, pole fleeing force ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, continental drift theory, उस टाइम ਅਸੀਂ exactly 10% नहीं है, less than 10% है. ठीक है. Pole fleeing force, it is a force caused due to spinning of earth. It is responsible for bulging at the earth's pole. यानी कि इसे force करके earth से ਜਿਹੜੇ poles है, ਸਾਨੂੰ bulging देखने को मिलती है, bulging effect. Okay, you say both the statements are correct. Okay. See, are you sure? This pole fleeing force is not responsible for the bulging. It is because of the movement of earth. ठीक है जी, spinning of earth ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ bulging effect ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ earth ਦੇ poles से देखने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है. pole fleeing force किसी ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ continental drift theory ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ continent ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ drift ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੈਗਨਰ. ਲੇਕਿਨ ਵੈਗਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਮ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲ ਫਲੀਇੰਗ ਫੋਰਸ. ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ ਅਕॉर्डिंग टू वैगनर. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप क्लियर हो गया, तो एक बार थम्स अप दे दो, देन अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सेकंड पॉइंट दोबारा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पोल फ्लीइंग फोर्स दे कारण, जस्ट अ सेकंड. सेकंड पॉइंट वाज सेइंग इट इज रिस्पांसिबल फॉर बल्जिंग ऑफ अर्थ्स पोल. अर्थ दे पोल से ਜਿਹੜੀ बल्जिंग है पोल फ्लीइंग फोर्स कारण नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग. अर्थ दी अपनी स्पिनिंग करके. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following. Earth's oceanic crust is denser than continental crust. Then oceanic crust thicker भी है. Then both have a same chemical composition. हुने question किया है related to third point. So one only. Okay, right? Oceanic is approximately 3 kilometers thick, whereas continental it is approx 10. Right? Yes. Answer is A. सियाल and सीमा का difference already किया है. तो दोनों density which thickness which chemical composition which they are quite different. Next, consider the following statement regarding plate tectonics. It is a theory contrary to continental drift theory. It is a theory that Earth's outermost shell is divided into several plates जो glide करती है, move करती है on mantle. Third statement, the driving force behind the plate tectonic is conventional in the mantle. Ocean is thinner, right? 6, approx 6 kilometers. Go on. दसो जी, plate tectonics theory दे बारे तुहाडे कोल statement पूछी जा रही है, which is the correct statement. Okay, all. Are you sure? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ. ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕॉज ਆਫ ਦ ਪਲੇਟਸ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ crust ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, not crust. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟਰੈਰੀ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. ठीक है, सो इट इज अ मॉडर्न वर्जन. आई होप इट इज क्लियर. थम्स अप दे दो, समझ आ गया. सेशन को लाइक कर दो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोग्रेविटी. Microgravity is a condition in which person or objects appear to be weightless. Second, it occurs when gravitational force around is zero or when objects are in free fall state.
ओके, अब कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। दसो जी, माइक्रोग्रेविटी के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखियां हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? Go on, waiting for your answers. Quickly. See, both the statements are correct. Okay. It occurs when gravitational force around is zero. Is it zero? कि माइक्रोग्रेविटी जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स की गल करती है या घट ग्रेविटेशनल फोर्स की गल करती है, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स की गल करती है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए वन ओनली। बाय माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी सिचुएशन की गल करती है जिथे ग्रेविटी जी है दैट इज वीक, एब्सोल्यूट जीरो ग्रेविटी की गल नहीं करती। या तो वो वीक होएगा या फिर एक स्टेट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ठीक है। ये स्टेटमेंट जड़ियां है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये माइक्रोग्रेविटी की सिचुएशन जी है ये यूज की जाती है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, वेयर बाय वो स्पेस दे विच हैवी जी हैवी चीज़ा ने, ठीक है, हैवी इक्विपमेंट्स ने उन्होंने अपनी फिंगर टिप्स के नाल मूव कर सकते हैं, उत्थे माइक्रोग्रेविटी यूज होती है। इट इज नॉट जीरो, इट इज वीक। I hope it is clear. Moving on to the next question. Consider the following statement regarding role played by tropical cyclones in regional and global climate. They carry heat energy away from tropics and transport it towards temperate latitudes. They can often bring intense rainfall to drought-prone regions. They also act as Earth's filter system by clearing the air of toxins and pollutants out of the atmosphere. हाँ जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एग्जैक्टली एनीथिंग इन द स्पेस दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोग्रेविटी, ठीक है जी। दसो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में स्टेटमेंट दसी जा रही है, you have to tell me the correct statement. Okay, I'll give you a hint. Tropical cyclones ਜਿਹੜੇ ਆ exactly they contribute ਇਹ drought ਦੀ condition ਤੋਂ relief provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। So now can you mark the right answers? So answer to this question, shall I display the answer? It is D, सारी ही statements correct है। I told you drought condition ਨੂੰ तो सानू relief provide कर सकता है, ठीक है। That is heat energy away from tropics and then second statement intense rainfall लेके आ सकता है to the drought prone regions। अगर rainfall आएगी तो automatically atmospheric pollutants जेड़े है, ठीक है, it settles down, okay। intense rainfall to the drought prone areas, here drought prone areas वाल ध्यान दो, ठीक है जी। Moving on to the next question. In tropical cyclone, as we move from edge towards the center, air pressure remains constant, increases significantly, then decreases, and then varies depending upon the wind speed and direction. Go on. Tropical cyclones are जो आप edges to center वाल जाने हैं, in between the cyclone, the point की है, is it a decreases significantly? Pressure area कितना दा है? It is a low pressure, okay। फिर जो ਅਸੀਂ एंटी साइक्लोन्स की गल करते हैं तो जेड़ा एयर प्रेशर है that is high, ठीक है। It is opposite to एंटी साइक्लोन्स, it is C, it decreases। एंटी साइक्लोन्स दा एयर प्रेशर सेंटर विच हाई होता है and edges से it reduces, और the opposite is tropical cyclones। Next question, bomb cyclone recently seen in news, ये ਆਪਾਂ करंट अफेयर विच भी कीता सी, bombogenesis proper नाम, ठीक है। So here a storm that intensifies very rapidly caused by massive anthropogenic explosions in the sun formed in the region of high pressure in southern hemisphere, and then we have is none of the above. हाँ जी, yes मैम, चलो फिर आंसर करो। बॉम्ब साइक्लोन्स, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Interval can be in any language, Prince Vlog.
Go on, cyclones. Why are you taking so much time? Already kita siga. Answer to this question is a storm that intensifies rapidly. ठीक है, 24 मिलीबार हर 24 घंटे, हर 24 आवर्स में 24 मिलीबार तक प्रेशर जड़ा है that falls. Okay. Yes. Bombogenesis कीता सी ना. Next, consider the following statement regarding cyclones and anticyclones. Cyclone originate at the area of low pressure while anticyclones जड़े हैं वो high pressure area च originate करते हैं. Both cyclones and anticyclones are associated with clouds, rains and thunderstorms. Exact definition is not a problem. पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि 24 घंटे 24 मिलीबार तक प्रेशर जड़ा है दैट रिड्यूसेस. दसो जी. Only, okay, only cyclones are associated with clouds, rains, thunderstorm, whereas anticyclone condition जड़ी है that is relatively stable, clear atmosphere. ठीक है. Absolutely हो सकता है प्रिंस. vlog interview is not a problem, language problem नहीं है. C, it is A. Okay, moving on to the next question. Thunderstorms are formed because of induction by low pressure cyclones, intense convection on moist hot days, meeting of warm and cold fronts, and then none of the above. Thunderstorms. Cumulonimbus clouds thunderstorms produce करते हैं, right? So what is the reason? B, intense convection on moist hot days, right? Moist hot days they warm air जड़ी है that rises up and a number of clouds यानी कि clouds जड़े हैं वो grow करते हैं and this ultimately causes precipitation. That is B, intense convection on moist days. So I think ਤੁਹਾਨੂੰ loopholes अपने पता लग गए होंगे. इकोनॉमी जोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ जोग्राफी ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ so that you can have an idea about your preparation. If you're lagging behind या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ organized preparation ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, already batches are going on at launchpad and we are expecting exam dates जल्दी आनगियां. So do not waste your time and ये time utilize करो अगर ਤੁਸੀਂ organized preparation करना चाहते हो. Even you, अगर ਤੁਸੀਂ preparation चंगी तरह करोगे then you can enroll for these batches. ठीक है. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ YouTube classes ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ MCQs ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ MCQs ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਲਸਮ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ. ठीक है जी. ओके, ठीक है जी. आई होप किसी के और कोई क्वेरीज एंड डाउट्स नहीं है. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर. कीप प्रिपेयरिंग. गुड लक.